Hello people, I'm Jaby Koay, joined by Achara. Hello people. We're looking at ASHISH CHANCHLANI's cinemas, then versus now. ASHISH CHANCHLANI. Cinemas? Do you remember what they were like? I got a funny feeling. I got a funny feeling. Yeah. I forgot until just now. You asked me that question, to be perfectly honest. I'm like, wow, it's been a really long time since we went and saw a movie at a movie theater. My God. Theaters are opening up in California, and When? Well, they're open. Yeah, 75% of theaters are opening up, But why are we not watching Tenet? Because it's not safe. I know. Thank you, ASHISH CHANCHLANI, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. Here we go. तेरी माँ बाप क्या दूसरे बाप के साथ पिक्चर चालू कर Oh wow. Why are you shouting? Keep your feet down. Keep your feet down. I said keep your feet down. Don't disturb the decorum of the multiplex. Decoration? Shut up! Why are you behaving like a rowdy hooligan? Hulk Hogan. I like Hulk Hogan. Nice. Shut the f up! Stupid people! समझ में नहीं आया पर डर जरूर लगा. Shut the f up! Oh. What the hell is he doing? चुप! एकदम चुप! पिक्चर देखने दे. डिस्टर्ब मत कर. मेरा हाथ. चुप! मेरा हाथ. चुप! मैं बोला हाथ. चुप! What is this making? What is this a reference to? Personal space? Oh God. Oh my God, my favorite Hrithik Roshan. Oh my God, my favorite Tiger Shroff. Oh my God, my favorite Chunky Pandey. एक मिनट भाई साहब मेरे को स्नैपचैट पे रिकॉर्ड कर दो. एक मिनट भाई साहब मेरे को इसको इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड करना है. एक मिनट भाई साहब इसको मैं नेटफ्लिक्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एक मिनट. हेलो गाइस वाचिंग वॉर विद दिस गवार. ऐसा मैं अबे पिक्चर भी देख ले. देख रहा हूँ पिक्चर और दुनिया को भी दिखा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ. अरे भाई साहब आपने वो इंस्टाग्राम पे जोकर पिक्चर रिकॉर्ड की थी ना. अच्छा टाइटल रिकॉर्ड किया था. मेरे को भेजो ना. मैं भी स्टोरी पे डालूंगा. हालांकि मेरे को पिक्चर समझी नहीं लेकिन शो ऑफ तो करना पड़ता है ना दुनिया को है ना. हाँ #जोक है फिनिक्स इज द बेस्ट. I see people do that all the time at the theaters. Yeah. वड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक, कबाब, वेफर, पॉपकॉर्न नहीं है बाकी सब मिलेगा. आजा रे वड़ा पाव. तेरी तो बात छोड़ के क्या था बे. चल दो पाव लगा. हाँ सर. 2 वड़ा लगा. ओके. चटनी एक्स्ट्रा दे और ये 2 ठंडा दे और अपना कबाब दे. मेरा कबाब. अरे नीचे वाला कबाब दे. मेरा नीचे वाला कबाब चाहिए. अरे ये नीचे कबाब ये वाला. अरे तो ऐसा बोलो ना सेठ. तुमको नकली कबाब चाहिए. मेरे को लगा शबाब बन गया. असली कबाब चुसना है तुमको. लो ले बच्चों को दूध पिला लेना. चल. अरे काय का दूध पिलाएगा इसमें. मैं खुद दूध नहीं पी पाएगा. 20 रुपया हुआ सबका. 20 रुपए. 20 रुपए. चला 8 आने का पाव, 8 आने का बेसन. आलू तो मेरा मामा बेचता है यहाँ पे. और ये घर पे बैठ के तू चटनी कूटता है फुकट में. ये काले पानी का पैसा तू देखो. इससे लगा तो मेरे पेट में. चला इसका पैसा लोगे तुम लोग. बिल मारती है मेरे को. तुम्हारे से महंगाई बढ़ रही है. चला जिधर देखो पैसा लगा के रखा तुम लोगों ने. तुम्हारे लिए ज्यादा खाना खाने को पैसा नहीं है मेरे पास. साहब मेरा थिएटर नहीं है. सेठ का थिएटर है साहब. अरे ओ हेलो सर. वेलकम टू क्लाइमैक्स सिनेमाज. क्लाइमॅक्स सिनेमाज में आपका स्वागत है सर. क्लायमॅक्स सिनेमाज मध्ये आपल्या स्वागत आहे. अबे क्या सारी बात छाप. साजे क्लायमॅक्स सिनेमाज में तवाजो स्वागत असेल. हाउ कैन आई हेल्प यू सर. एक काम कर 2 लार्ज टब दे. 3 लार्ज कोल्ड ड्रिंक कर. फ्रेंच फ्राइज, 1 पोटैटो वेजीज, 1 लार्ज पिज्जा. ओके सर. कितना हुआ बताओ सर. कंप्यूटर अटक गया है सर कैलकुलेट करने में. मैं चलना सर. आपका टोटल होता है 22 नहीं सर 24,000 What the hell? विदाउट जीएसटी. Oh. 18% जीएसटी लगेगा. नहीं 50% लगेगा जीएसटी. 50%. It's like tax. हमारे यहाँ Like VAT. ये क्या पागल है क्या यार ये. आपका टोटल अमाउंट होता है थूक मार के 36,000. आई नो सर. ये सब प्राइस देख के आपके पीछे का गोदाम फट गया है. लेट मी हेल्प यू. It does feel that way.
Yeah. वेलकम टू पॉपकॉर्न लोन स्कीम। बताओ सर, 3 साल का लोन बना दूं? 3 साल? पर महीना आपको 1000 रुपया भरना है 3 साल तक। मैं आपको अभी के अभी आपके सारे आइटम दे देता हूँ। 1000 रुपया पर मंथ? सर हमारे पास म्यूचुअल फंड्स की भी स्कीम है सर। म्यूचुअल? सर इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ 100 रुपया भरना है और बाकी 359 लोग भी 100 रुपया भरेंगे और आपके जो आइटम है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सर 100 रुपए में आपको आएंगे 2 पॉपकॉर्न, 2 घूट कोल्ड ड्रिंक, 1 आलू का पीस और पोटैटो वेजेस नहीं मिलेगा सर। नमक दे देता हूँ सर, चाट लेना। सर अब इंश्योरेंस भी देते हैं सर। इंश्योरेंस? सर अभी समझो आप पॉपकॉर्न लेके जा रहे हो सर और गलती से आपका पॉपकॉर्न गिर जाए सर, 36,000 वेस्ट सर। वो देखो सर, एक आदमी पॉपकॉर्न लेके जा रहा है, देखो सर अभी उसका अगर पॉपकॉर्न गिर गया, देखो सर गिर गया बेचारे का, उसने इंश्योरेंस नहीं कराया था, वेस्ट सर। Oh god, I got a story. देखो सर वो बेचारे गरीब का कितना नुकसान हो गया, समझे आप सर। तो इंश्योरेंस भी जरूरी है सर। ये सर मेरे साथ नहीं है सर। तो सर बताओ, म्यूचुअल फंड या सर लोन दे दूं? मेरे को कुछ भी नहीं सर ले लो चाहिए। सर, मैं जा रहा हूँ, मेरे को टिकट मूवी कुछ नहीं देखना। मैं अरे कार सर में मैं देता हूँ। सब है। अरे मैं भाग रहा सर, हूँ। अच्छा सर सुनो, पार्किंग चार्जेस तो भर के जाओ 10,000 रुपए। सिक्योरिटी पकड़ो साले को। It's always the same movie they're watching. Yeah. When I was a kid, my dad and I used to like sneak in popcorn and sodas. Like a whole bunch. Oh my god. This is ridiculous He's though. having a full-on meal. Oh, he got like sugarcane juice. Oh shit. This is ridiculous. Is he doing a pee-pee? Oh, What the hell's he doing? washing his plate. Oh, is it an animal? Oh, कहीं भी घुस जाते हैं पागल। पीछे पीछे पीछे, बैग दिखा, बैग दिखा। uh-oh. All the snacks. बाद में बैग दिखा। क्या ये किताब? स्क्रिप्ट लिखना है, अलाउड नहीं सर। ठंडी है, बहुत गर्मी है, ये उतारना पड़ेगा, अलाउड नहीं है सर। है ना आपके पास? ये क्या करोगे? अलाउड नहीं है। ठीक है, रुमाल अलाउड नहीं है। अरे कोनी लगता है, कोनी ऐसा बाजू वाले को अलाउड नहीं है। अच्छा, पिक्चर प्ले पॉज करने वाला था। अरे चुप, अलाउड नहीं है। अरे भाई सब अलाउड नहीं है भाई, मैं भी अलाउड हूँ कि नहीं अंदर? घड़ी टाइम बता ना बस। अरे क्या करेगा घड़ी? अलाउड नहीं है बस। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। डब्बा, तुम क्या चाहते हो? ये गरीब कैंटीन वाले कमाई नहीं? अरे मतलब मैं अपने मर्सिडीज की EMI नहीं भरूं? मेरे बच्चे PS5 नहीं खेले? अरे सुबह डांस बार जाके पैसे नहीं उड़े? सॉरी भाई, मैं नहीं, सॉरी भाई, सॉरी यार। अच्छा नहीं रखता बाबा, नहीं मैं बांट दो यार, गरीबों में बांट दो। इधर आ, तुझे तो हाथ से चेक करूंगा मैं। बैग अलाउड नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी देखो मैं मशीन से चेक करेगा। बस कर भाई, क्यों टॉर्चर कर रहा है? बम स्क्वाड! अरे भाई रॉड डलवाई थी, पैर कट गया था मेरा एक्सीडेंट में, इसलिए बज रहा है। सर रॉड तो अलाउड नहीं अंदर। तो फिर क्या करूं मैं? आप जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ? 1 सेकेंड। ओके। अरे भाई हटो यार, मर क्यों? सर भागना अलाउड नहीं है। Oh my god. That's a lot. Oh my. चुप हो जा, बच्चा है ना। अब उसकी माँ नहीं आई है, इसके लिए दूध भी नहीं पिला सकता।
कुछ नहीं, दो मिनट चुप हो रहे। हमेशा गलत टाइम पे रोता है, घर पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे। साला पागल। साले पागल बाप बच्चे पालने आते नहीं है। अभी क्या होगा? मालूम नहीं। अभी क्या होगा? अरे मैंने भी उतनी देखी है जितनी तुमने। Nothing's changed. It's worse. चुप हो जाओ। That's शर्म Jaby. नहीं आती सालो? रोता हुआ बच्चा थिएटर में लेके आते हो? सालो एक वीकेंड मिलता है मेरे को पिक्चर देखने का, उसमें भी बच्चा रो रहा है। तुम जैसे माँ बाप हो तो बच्चा तो रोएगा ही ना। क्या सोच के लेके आया बच्चे को? वॉर नाम है पिक्चर का, वॉर। ऋतिक और टाइगर का लफड़ा चल रहा है। छोटा भीम और राजू का लफड़ा नहीं चल रहा है। देखना पाप पड़ेगा तुमको माता रानी का। पाप का मैं ही दूंगा तुमको पाप सालो। देखना मैं भी 4 बच्चे पैदा करूंगा, उनको रुलवाऊंगा और तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा पिक्चर के टाइम। समझे? शर्म आती नहीं है साले हरामखोर लोग। साले बच्चा लेके Exactly. भाई साहब प्लीज अपने बच्चे को शांत करा दीजिए ना। अरे बच्चा है वो, 2 घंटे और क्या करेगा? पागल। चलो नहीं समझ रहा, निकलो यहाँ से। इतना बच्चा रोता है यहाँ पे, उसको कुछ This नहीं is बोलता, मेरे को exactly- बोलता है। this is नहीं समझ exactly रहा, what happened on the मूवी airplane. देखो। इधर फैमिली आता है, इधर मूवी देखने को अपनी फैमिली के साथ आया। बच्चा मेरा फैमिली है। चला उधर देख, उधर 6-8 बच्चों का सट्टा कर रहे हैं। वो उधर हग रहा है, बाहर से इधर तक वो रो रहा है। पागलपन चालू है पीछे। दंगा चलो, उनको मुझे बोलेगा, मेरे को बोलेगा। भाई साहब अगर आपको इतनी तकलीफ है तो बच्चा मुझे दे दो, मैं शांत करा के आता हूँ। बच्चा चोर। चलो जानता हूँ मैं तुम जैसे बच्चे को लेके जाता हूँ, मुझसे गया मैं, फिर घूम हो जाते हो। चोर निकल जाते, निकल। और बच्चा बैठ के मारूंगा, निकल जाए। चल आला आ जाते कहीं कहीं ना मूवी देखने। आई Yeah, that's accurate. चल भाई चल 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 जल्दी चल। अरे यार पिक्चर चालू हो गया। ये साला थिएटर वाले 3 बजे रखते हैं शो, लगा 3 बजे चालू करेंगे क्या? थोड़ा 5 मिनट तो लेट हुआ। 3 अरे 5 मिनट मतलब क्या? जैकी दादा का एंट्री मिस कर दिया तेरी वजह से, तेरे खटार स्कूटर की वजह से। आराम खोर। चल वापस चालू करा पिक्चर। चल तू ही चालू कराएगा पिक्चर वापस। चल चल। Oh thank God, picture has not started although I'm late. Presenting to you हमारा न्यू ये साले डबल एप्पल वाले। अरे भैया तुम्हें कब है का? अरे यार म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट मालूम ना फॉर इन्वेस्टिंग। मास्टर सीटेक्स मलहम लगाओ, खुजा के टट्टा लाल मत करो। फेयर एंड लवली लगाते ही मेरा छावा मेरी शक्ल देख के अंधा हो गया। भाई पिक्चर चालू करोगे? ऐड ही देखने हम। इस शेर को हुआ क्या? कहीं लाख है तो कहीं जुआ जुआ। अरे नहीं पीते बीड़ी भाई हम। ऐसे था। मैं सारा दिन गुटखा खाता था, चपाती के साथ गुटखा, चावल के साथ गुटखा, हफ्ता भी गुटखा। From Charpik. 12, 13, 14। साफ करने आया है। हाथ डाल के चलिए। 58, 55, 60। चीको सल्फ्यूरिक नहीं ऑर्गेनिक, चीको सल्फ्यूरिक कामासूत्र क्रीम तुलसी और कोडो को जल से मिटाए, गांजा चरस के घोड़े इसमें समाए। चीको सल्फ्यूरिक कामासूत्र क्रीम। पिक्चर चालू करो यार। नहीं मैं पिक्चर में थोड़ी आया हूँ, मैं ऐड पे आया हूँ। ऐड पे 2000 ऐड दिखा चुके अभी तक। नहीं मैं सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग छोड़ दूं, ऐड डायरेक्टर बन जाऊं मैं। मायरा उतर के घूम आई डोंट केयर। मायरा गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। पेशाब करके Hey, what the hell? पोते हक कर रहे होंगे। अरे भैया पिक्चर चालू कर दो यार। भैया That was very my God. on point. That was, I mean, yeah. at least with regards to what's going on now, the baby one especially. Oh my goodness. Yeah, I felt like you could relate hard. I just remember us watching Sachin's documentary. Yes. And there was just like kids running around. I'm like, what the hell? What are you doing? Why are the kids running around? Like, why are you allowing this to be? Because it was majority Indians, I didn't know like what was the proper etiquette amongst Indians, and then people educated me in the comments are like, yeah, you should have said something.
Like, I don't know, like people are talking, like I don't know if it's just different. Yeah, I mean, it seems like, at least maybe in India, going to the theater, it's kind of more acceptable to be chatty in the theater, and definitely to be loud, like they were in the first bit, where it was like, they got really excited. People still do that, I think, depending on what kind of theater you go to. I remember seeing a comment from someone in one of our videos where he said that he got tinnitus in one of his ears because of all the shouting at a theater that he went to once. A South Indian film, probably like a Rajnikant film or something. Right. And so they still do that. It sounds like a lot of fun. I mean, it's kind of like when we watch something like Avengers. Yes. On the first day. The vibe is just crazy. Why are you shouting? I feel like as an American, I can relate to this one a lot, where you just want people to shut up, yeah, so you can just enjoy the movie. You didn't come for them, you came for that. The stuff with people taking pictures, like, at least every single Indian film I've gone to, I see that happen at least once. Yeah? Yes, every single one, at least once. I see someone do a click, I'm like, yeah, you're not supposed to do that. You get kicked out for that. But also just people being on their phones in general and just having them really bright. I've had to talk to people in the movie and just be like, it's distracting. It's like, if you came to watch a movie, just watch the damn movie. Well, don't be on your phone checking Instagram or whatever. Achara's caught me in many instances where, like, I see someone just like keep on their phone and they're in front of me and I go, excuse me, could you please turn that off? Please, thank you. Like, just shut it off. Just shut it off, please. And they get scared. And it's like the voice in the dark. I sound like I'm a foot taller than I am, and people are like, ugh, and they just kind of just drop it because they get freaked out. I've seen Achara do it once, but she doesn't have a very scary voice. No, I go, excuse me? Excuse me, sir? Excuse me? Do you mind turning off your phone? It's just very bright. And then they give me a dirty look and they're like, yeah. Who's this bitch? See, you gotta scare them. एक काम कर, 2 large tub दे, 3 large cold drink कर, French fries, 1 potato veggies, 1 large pizza. Total होता है 22, नहीं sir, 24,000. The stuff with the popcorn or the food, my God. I mean, we just got Burger King the other day. It was what, $20? $22? Yeah. Burger King is supposed to be cheap. By the way, it was Impossible Burgers. We didn't actually eat any cows. No cows were eaten. No cows were eaten, no cows were harmed. It was $22 for 2 burgers, some fries, and soda. Yeah. $22, that's 1,600 rupees. That's ridiculous. And so at the movie theater, same kind of thing. It's just a lot. It's like $20 for popcorn, $30 for a soda. By the time you get in the theater, you lost your kid's savings. I had a friend who used to work at a theater, and she told me that actually theaters don't make that much money off of ticket sales, but they make the most money off of concessions. And she said popcorn, the cheapest thing ever, and you can mark that up so high. I believe it. Yeah. So this thing with the dude dropping his popcorn, when I was in 6th or 7th grade, I don't think you ever heard this story. No. When I was in 6th or 7th grade, because I'm such a clean freak, okay? You have to keep that in mind. That's why it's gonna surprise Achara. I was at McDonald's, I was hanging out with friends, and I didn't have any money as a kid. You don't have a job as a kid, and sometimes my parents were stingy about giving me money. And this guy had like so many fries, a whole tray of fries, and he like tripped and they all fell down. And I love fries. I looked at it, I'm like, some of that's not touching the ground. And he didn't touch that. Oh my God! I grabbed a handful, I ate it. You didn't. Yeah. Wow. That's one of 2 times I've eaten something that wasn't mine. It stayed with me because I'm like, I feel a little bit of shame because of this. Oh my God. Yeah. Wow. And yeah, that's definitely not like you at all, because I know how much of a germaphobe and everything that you are. Well, it's grown worse with years. I didn't really get the thing about the movie time. I certainly got the thing about like checking it. I mean, it's so frustrating because you wait in this long line to get into something. You don't know what you're not allowed to have because there's no signs posted before you go in, right? And they just tell you when you get there and they're like, oh, you can't bring this, can't bring this. The closest thing I can think of is like theme parks. Theme parks here are notorious for this shit, where you have a backpack of stuff because you're prepared for the day and you get to the thing and then they're like, oh yeah, you can't have this. I'm like, what are you gonna do? Throw out $30 of stuff? They're like, yeah, you have to. So what I did was I had like some snacks in there and the guy's like, you can't bring any of this. And I'm like, look, man, I'm a diabetic. I need it for my blood sugar. I lied. It's like, okay, fine, go ahead. It's like, he wasn't gonna fight it. And I did that with you actually once. Yeah, you did. Because we were trying to bring food into the theater. AMC. We were trying to watch a Shah Rukh Khan movie. I think we were trying to watch Zero. It's one of those movies. The guy checking him got really uncomfortable. Ashish always takes it to this level where you're like, okay, making sense. This is getting absurd. This is just crazy now. I told this story before somewhere on this channel, at least twice. It's been a while and it's been like 4 or 5 years I've been hanging out with you guys, so might as well tell it again. Okay. At the airport, I'm going to Austin, Texas, and I'm going through security and whatnot, and the guy decides to like scan me with his boop thing. He starts feeling my legs like this dude. He's like boop boop, and he feels my thigh.
And he goes, what's this? What's this you have in here? And I'm like, that's my dick, dude. Then he goes, what? I'm like, why would you poke it again? Did you get hard? Now you're molesting me. No, I'm just hanging there. And it's just like, dude, why? Why would you do that? I don't know you. Do we wake up together? No, stop. That's so bad. And then the baby thing, man, like we talked about that already, but like the babies are the worst. And then when I experienced this was with Achara again on the Indian flight. They kept kicking me from behind. I don't want to go into it again. You guys heard the story already, but like, it's like, oh my God, he turned it against me. He's like, if you didn't want to deal with these problems, you should have got a business class ticket. I'm like, how is your baby my problem? It is now. I didn't make you put a baby in that lady. Stop. It's nonsense. And the way ASHISH CHANCHLANI reacted was like so real. Well, see, that's the thing though. I love that he had the fantasy version where he like goes off on them and they're all like, oh my God, no, I'm sorry. But then in reality, when he tries to just very quietly go, hey, can you make your baby be quiet? They're all like, oh my God, you're so awful. Why aren't you complaining about all those other kids? And it's like, oh yeah, it felt very real. Yes. Yes. And then the last thing was the ads. So many ads at theaters now. Oh my God. So many ads, it's ridiculous. Like you go there and you show up on time at 5 o'clock and then you don't see the movie till 5:45 because there's like ads before the ads. That's not that bad. Yes, more like it 20 is. minutes. Well, there's 20 minutes of just commercials and then the actual trailers. Oh. It's 15 minutes of trailers. It's ridiculous. So anyway, you guys, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed some of that. Make sure you subscribe to the channel if you haven't already. Check out other reactions, reviews, short films, vlogs, and interviews. Thank you to ASHISH CHANCHLANI for allowing us to react to this. Very much appreciated. Also, KIRK. Hi. Bye. Peace out.